नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के इसी में कुछ रिक्रूटमेंट रिलेटेड है जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इसके रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले हमारा एक कुछ फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। तो जो दोस्तों हमारा ये हरिदास हलदर यूट्यूब चैनल में नया विजिट कर रहा है तो उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रीच टू योर एंड। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर विथ फ्रेंड्स और रिलेटिव जो एज एप्लीकेबल फॉर दिस जॉब। ओके, कम टू द पॉइंट। ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के कुछ एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑन द prescribed application form available on the university website from the eligible candidates for appointment of professor, associate professor, assistant professor and regular basis in the following department of the university। ये एक्चुअली सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट का है। तो इसी के रेगुलर बेसिस है। तो इसमें नेम ऑफ डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल साइंस प्रोफेसर अनरिजर्व है, वन रेगुलर बेसिस है। फिजिकल एजुकेशन एसोसिएट प्रोफेसर अनरिजर्व, वन रेगुलर बेसिस। बोटानी असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व, PWBD 1 अनरिजर्व, वन रेगुलर बेसिस। अच्छा कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर SC के लिए वन, लेकिन ये SC के लिए है, जनरल नहीं कर पाएगा। उस केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व, वन रेगुलर बेसिस। इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर BCA 1 रेगुलर बेसिस। जियोग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर EWS 1 अनरिजर्व, वन रेगुलर बेसिस। हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट A1 उनके लिए सेफ है। हिंदी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर SC 1 रेगुलर बेसिस। फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर BCA 1 रेगुलर बेसिस। पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर ESM 1 फिजियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर EWS 1 अनरिजर्व, वन रेगुलर बेसिस। जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व, वन रेगुलर बेसिस। देखिए द नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज और may be withdrawn, only the shortlisted candidate will be called for interview। ये इंटरव्यू में देखा। पे स्केल प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 14 और एसोसिएट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 13A और असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10। ये स्केल ऑफ पे एज पर द 7th पे कमीशन के रिलेटेड होगा। क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब बाय द UGC फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। UGC मास्ट होना चाहिए ये प्रोफेसर के लिए। एंड एलिमेंट स्कॉलर विथ PhD क्वालिफाई इन द कंसर्न allied relevant discipline and publish work of high quality activity। देखिए actively engage in the research with evidence or published work with a minimum of 10 publication in research जर्नल। ये जो कैटेगरी देख लीजिएगा
5 पॉइंट है, इसी हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन प्रोफेशन prescribed by UGC for the post of associate professor। UGC क्वालिफाइड होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ ए PhD डिग्री इन द कंसर्न allied relevant discipline। The PhD degree shall be mandatory qualify for the all candidates to be appointed associate professor through direct recruitment। direct recruitment के लिए the master degree with at least 55 marks on an equivalent grade in point scale, where grading system is followed as a minimum 8 years of experience of teaching and or the research in a academic research position equivalent to that a assistant professor। ये जो पॉइंट आज दिया गया ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब बाय द UGC फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET नेट टेस्ट शैल बी कंपल्सरी। एक नेट कंपल्सरी है फॉर द अपॉइंटमेंट at the entry level of assistant professor, subject to be exemption to the degree of PhD in respective of those person obtain the award through a process of registration, course work and external evaluation as have been laid down by the UGC through its regular 2009 and 2016 के। The minimum requirement of good academic record 55 marks or an equivalent grade in a point scale, wherever grading system is followed at the master level, minimum 55 marks an equivalent grade in point scale where grading system is followed will be required at the master level for those required as teachers at any level from industries or research institution and at the entry level of assistant professor, assistant librarian, assistant director or physical education or and post sport के लिए the relaxation 5% may be provided to the graduate and master level for the scheduled caste के लिए 5% and local scheduled tribe able differently able physically and visually different able categories for the purpose of eligibility and assessing good academic record during the direct recruitment to teaching position. The eligibility marks of 55 marks and equivalent grade in point scale where grading system is followed, and the relaxation 05 the categories mentioned above are permissible based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures are 5 number a relaxation of 5 marks provided from 55 to 50 of the mark of PhD degree holders who have obtained their master degrees prior 2019 सितंबर
और 1991 relevant grade which is regarded as equivalent of 55 marks wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible. उसके बाद देखिएगा ये जो दिया गया है क्राइटेरिया जो score drawn in the light of the criteria for API score minimum requirement 400 points. इसी से टोटल मार्क्स 100. इसका एकेडमिक रिकॉर्ड 25 अंडर ग्रेजुएट 50 to 60% 7 marks. BA BSc ETC 60% above 10 marks. MA MSc 55% above 11 marks. 60% and above 15 marks. Residence preference research or performance 40 marks. Domain knowledge and trading skill 18 based on the merit and successful difference 5 good shorted and इसी से एक्सपीरियंस 5 marks. इंटरव्यू 12 marks. कम्युनिकेशन स्किल कॉन्फिडेंस लेवल क्वालिटी रिस्पॉन्स ओवरऑल पर्सनालिटी इसी हिसाब से दिया जाएगा. रिसर्च एक्सपीरियंस टेक्निकल एक्सपीरियंस टू बी क्लेम्ड फॉर wastage beyond minimum eligibility of teaching and research experience. The period required to be acquire MPhil and or the residency period to acquire PhD degree shall not be considered as research. इसी हिसाब से उसके बाद देखिएगा PhD ये जो पॉइंट आप लोगों को देख लीजिएगा. अपेंडिक्स बी केयरफुली देखिएगा. अपेंडिक्स बी को केयरफुली देखिएगा. अपेंडिक्स बी किसके लिए ये है क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब. अपेंडिक्स बी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए. ये जो टेबल दिया गया इसी के हिसाब से आप लोगों को मार्क 400 मार्क्स रिक्वायर्ड है. तो उसी हिसाब से ये इसी ओके. डिटेल जानकारी के लिए ये डिटेल्स अवेलेबल यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.cpu.ac.in में आप लोग विजिट करिएगा. इसमें उसके फॉर्म भी मिलेगा. डायरेक्ट इसी में फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा. इसके साथ इसको नोटिफिकेशन को केयरफुली देख के आप लोग भरिएगा. और इसमें एक चीज़ फीस के बारे में आप लोगों को फीस के बारे में